Yeah, good morning, everyone. And my sincere apologies for being late. We just had a small technical thing. So, apologies again. And, thanks everyone for joining on this session that we want to talk about features on the ICICI Direct platform, which will help you do effective trading. So that is the topic of the session today. That when you are trading in markets and markets, first of all, trading is extremely difficult. A profession, if I were to say, investing is also difficult, specifically in volatile times, but more so in trading. There are two things which are extremely critical. One is that before the trade, how much analysis, how much depth have we put in to our strategies, so that when we actually go live in the market, when there is an actual trade, we are more sure. We know when we will have our exits, when we want to exit, book profits. Otherwise, generally, as we all see, emotion takes full control of what we do. Even if there is a stop loss, even if we feel that yes, at this level we had to exit, but because we are live in the market, we'll think, no, let's wait for some more time, let's wait the bounce back comes. So it becomes more of emotions than of skills. So hence, we wanted to talk about certain things which will help, overcome, our, the anxiety which market causes us. And we will talk about certain tools on the platform, which kind of helps on that. This webinar will be in English. Please, and I will speak in Hindi for some time whenever there is something which, we would need to cover in details. But otherwise, largely, we will do this webinar. We will in English itself. So if I were to, just come on the ICICI Direct website, and, we've started with a watch list, right? And this watch list there are a lot of nuanced on it, which we will showcase you as we move along. But just to get you started, and for people, again, this is a webinar, or the topics are on trading side. So I'm going to focus more on traders, trading part, and not on investing part as such. And hence, you will see a lot of things on trading side, during a discussion. So the first thing I will start with, let's say we want to trade any stock, and even if it is a cash market, we want to buy a stock, in cash market, or, even for an F&O contract. So let's just, get the option chain of the contract, which is very, very important as the first thing we should see, right? So let's say I'm just trying to, we'll come to Nifty also, but let me start with Reliance as an options contract. And on ICICI Direct website, you can expand this option chain and you can see the full option chain of the stock, right? Now, when you see this option chain, there are certain things which are important to see, right? Where I am see on the left hand side, you are seeing, the call, and, on the right hand side, you're seeing the open interest, right? Again, also, I just want to make a point that this webinar is not going to talk very basics of what is open interest. This webinar will indicatively tell you, what factors do you need to go. We're not going to do very basic discussion. So if I were to say, and if I were to see this option chain, Reliance trading at 1204, right? Now, if you look at Reliance, now the important thing in the mind of the trader is, what are the key support levels for Reliance? At that means which level should I buy, or which level should I watch out for? And then what is the target that I can imagine on the stock? So if you look at the, if you look at Reliance on the call side, if you see 23 lakh shares are, there is open interest, which means people, and when you look at open interest, typically you look at sellers. That is the open interest that you see.
So there are 23 lakh shares, which means people believe, 23 lakh quantity is wherein people believe that it will not go below 1200, which is, the expiry on, which is expiry tomorrow, right? There are put sellers who are also strapped, if I were to use the word, on 1220, 1220, because Reliance actually yesterday was somewhere closer to 1215 than it closed at the end of the day. So I'm just saying that this is a key level for the stock. And after that, the supports are a little wider, right? And the option premium, the option seller has got around 5 rupees. So around 1195 is a very, very key support for this stock at this point of time. And just looking at option chain, you look at the call side, right? And you look at the kind of call selling which the stock has, which is, a 13 lakh shares at 1210, 21 lakh shares at 1220. So almost what, 13 lakhs, 20 lakh, 34 lakhs, 56 lakhs, 76 lakhs crore, almost 1.5 crores. And if you come here, I mean, till 1300, people have sold nearly 2 crore shares on this expiry of Reliance. And they would be thinking that this is a high congestion zone. That means if the stock moves up, these are call sellers, they will come in heavily. And, there is a lot of congestion which you will get. But the thing about it is, and, and that is why if you see the stock is also under pressure. But the thing about this is that if the moment the stock moves, and, because there is so much of call writing which has happened on these levels, when the stock moves up, the move is ferocious, or I'm using the word ferocious just to tell you, the move becomes very sharp. So if Reliance were to break, 1220, 1230 tomorrow, in market, you will suddenly see these 50, 60 lakhs option writers who have, were thinking the stocks will not go up, will have to cover, and then the move becomes sharper. So just to get you an indication, see, whenever you're trading in the market, just to get some indication of what are the key levels, it helps, as we said, pre-trade, right? Now let's just look at Nifty also, right? And Nifty expiry is tomorrow. So if we look at Nifty 12, 2250 it closed in, and if you look at the put base, which is around a crore shares are standing at 2500 put. I mean 22,500 put, which means people are not expecting beyond this level, right? And around a crore shares are also standing at 22,600. And these option sellers, the put sellers, they are little in the money, and they are little, they would be nervous if the markets were to fall down. But if you look at the call sellers, of Nifty, so the first level is resistance is to the 22,600, and the key resistance is 22,700. 1.5 crore shares nearly. So I'm saying, and there's not too much of open interest. 22,000 is around is pretty far away, and these are people who would be very happily sitting on these levels. I mean, there is not much call writing also. I mean, that's a little, obviously tomorrow these numbers will change, but just to get you an indication, right, that what are the key levels on the put side, if this level holds, the put, the people who sold options, they will be kind of fine. And the resistance will be around 22,700. If that were to break, tomorrow, then the market then kind of sees a faster move, right? So the limited point that I want to make is that by looking at option chain, you can look at Nifty, Bank Nifty, you could look at various stocks. You get a sense of where the positions are built up. In stock options also, you pretty much get a decent understanding of where a lot of trades are standing, right? I mean, and you can get it directionally. You can be right. Like ITC also, there is significant call writing. In fact, a lot of people over the market in the last few months have unfortunately, call writing has worked. So a lot of people are just selling calls. Sometimes, at some point of time, people do get, on the wrong side also. So then the moves also becomes a little sharper. So this is the first thing, which we wanted to showcase to you, that on the ICICI Direct watch list, all these information is available. You can go to the option chain, and on the option chain, you could expand the option chain, and you could look at the entire data. And very soon, we're going to build the capability of basket order on the same platform.
wherein you अगर आपने now just speak this in Hindi, if अगर आपको इसी प्लेटफॉर्म से कोई स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी है, विच इज जैसे कि आपने कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, यू विल बी एबल टू क्रिएट इट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. अभी आप अलग से बास्केट ऑर्डर पे जाते हैं, वी विल कम टू दैट. दैट इज समथिंग विच विल नॉट बी रिक्वायर्ड. आप इसी प्लेटफॉर्म पे यू विल बी एबल टू डू बोथ. आप एनालिसिस भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस भी कर सकेंगे. सो ये एक पहली चीज विच आई वांटेड टू शोकेस टू यू from an analysis, from effective trading, study perspective. The second thing I wanted to showcase to you on ICICI Direct platform, jo ki I'm sure many people do, which because we do look at a lot of customers. A lot of people, what they do is they look at charts. So मैं एक आपको बहुत ही सिंपल एक सिंपल वो बोलता हूँ कि अगर आप देखें आज एबीबी का मैंने एक चार्ट खोला है, एंड मैं लेट मी गो टू 3 months, और मैं थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम भी देखता हूं मैं अगर तो अगर आप अगर आप इसके चार्ट्स को देखें और लॉट ऑफ एंड आरएसआई साथ में प्लॉट करें, राइट. मैंने थोड़ा सा वीकली बेसिस का चार्ट लिया है. इसका आरएसआई है 32 का, आपको दिख रहा है अभी. अगर आप अगर आप एक साल का, इफ यू लुक एट दी आरएसआई इन वेरी सिंपल टर्म्स, व्हाट इज आरएसआई? RSI means relative strength index. Typically, people look at 14 days, which means that out of 14 days, if that was the number, how many days the stock had a positive closing or a negative closing, which means that out of 14 days, if the stock had a negative closing out of 14 days, every day the stock is down, every day there is negativity. So people typically say that it is oversold. And whenever this overselling or oversold levels happens, it goes to around 30 is the benchmark. It can remain oversold also, which we all know. Typically there is a bounce back. और अगर आप इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कभी स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो अगर आप इसको देखें तो जब भी ये ओवर बॉट भी होता है तो थोड़ा करेक्शन आता है, जब भी ओवर सोल्ड होता है, आई एम सेइंग कि देयर आर बाउंस बैक. So people look at it, right? अगर आप 2-3-6 महीने का भी व्यू लेके अगर आप स्टॉक, if you're looking at a stock, just to get a sense of whether the stock is over, are you buying it at a scenario जहाँ पे कि ऑलरेडी बहुत चल चुका है, और you're looking at a period जहाँ पे कि people are pessimistic on the stock and it is oversold, and hence you want to accumulate it. So just a simple indicator, you can go here, आप RSI, you can add any kind of indicator, जैसे कि मैं I will add a moving average, right? Now this is also important indicator. let me change the day to 30. 9 day का है, 9 दिन का एवरेज लिया मैंने, इसको 30. let me look at 30-day average. So if you look at it, the stock is way above is moving average, right? Way below, sorry. And अगर आप देखो तो यहाँ पे जब ये moving average के नीचे आया तो there is a sharp fall. So I'm just saying that people look at various indicators in the market and देखते हैं कि अच्छा इसका ट्रेंड क्या है. इसका ट्रेंड अभी if it's like, so ये this is the line. If it's above the line, it's kind of positive. Otherwise, it's a little. So I'm just saying that people look at all this. आप ये you can look at it on the ICICI Direct platform and then decide your trades, which helps you understand. I will just tell you, if you look at this line itself, where is, if you were to plot ABB, right, and if you were to let me just take a drawing line, and if you were to plot a key level for ABB, in fact it will be a little lesser than this. It will be around this level अगर आप इसका हिस्टोर वो लेते हैं. So, यहाँ पे इसका key support है stock का, right? You get a key support somewhere closer to 5,300, which is the stock trading at right now, this price. The second is going to be on, the next, if you see here, is at 4,500. That is the next key support on the stock, right? So आपको एक चार्ट से आपको सेंस मिल जाता है कि अच्छा ठीक है, हिस्टोरिकली अगर हम देखें, we are looking at a longer period of time, where did the stock start rising? So this is, and I'm saying typically anybody who's traded markets, just to tell you one thing, people do believe technical analysis. And just to get you a perspective on technical analysis is just built on human emotion, right? And I will just tell
you a simple story and just to give you, make you understand this better. If I were to talk about Tata Motors, right? Now, Tata Motors, I mean, people who have been familiar with the journey of Tata Motors, it was trading 5, 6 years back around 650 rupees. 650 रुपए पे ट्रेड कर रहा था. It came down to 550, preference करा. It came to 450, it came to 300, 150, 70 rupees, or it remained. This damage was there 5 years. सो जो इन्वेस्टर्स 5 साल पहले स्टॉक को 500 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए पे खरीदे हैं और 5 साल हो गया वो स्टॉक 70 रुपए पे है, द फ्रस्ट्रेशन इज सो मच इन द माइंड ऑफ द इन्वेस्टर इज दैट बॉस जिस दिन मेरा भाव आएगा ना, आई एम गोना एग्जिट दिस स्टॉक, राइट? एंड व्हेन इट मूव्स अप, you will suddenly see a lot of people selling the stock, right? वो और लोग बेचते हैं फिर, so it is resistance, right? अगर example, if I were to build on this and just say market today is 22,500. 3 months, 4 months back, it was 26,000. So many of us would not have thought कि इतना नीचे आएगा. What is the feeling which all everybody is sitting today is कि काश मैंने 26,000 पे बेच दिया होता तो आज I would have thought I would be happy, आज मैं और बाई करता. So it's a miss out feeling. It is a there is regret. Now next time when it comes to 26,000, you will certainly see so many people selling, which means there it is a resistance, which now 26,000 has become for the market. But if market crosses 26,000 and stays above 26,000, that means जो exit कर रहा था वो निकल गए हैं, and there are fresh hand in the market. तो basically technical analysis is just saying कि जो human being करते हैं past में, जो human behavior है, वही human behavior will replicate in future. So if you, and that is the way. So I'm just saying कि for traders, again, as I use the word, इन्वेस्टर्स हु आर लॉन्ग टर्म, उनको बॉदर नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है रोज बेसिस पे. उनकी लाइफ तो सॉर्टेड है, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम ओनली. मतलब आप होल्ड कर लीजिए रिलायंस को, एचडीएफसी बैंक को, लार्सन एंड टूब्रो को, एचसीएल टेक को. लाइफ देयर इज दीज कंपनीज हैव क्रिएटेड वेल्थ, राइट? भारती एयरटेल, दे जस्ट मल्टीप्लाइड वेल्थ. बट वो easier said and done है. It's not, when markets fall, all of us get jittery, nervous. And hence there are people in the market, who are looking at not very, very long term, but short term. So again, this is for people who are short term into the markets and not very, very long term investors. So, hence this was just one thing. Abhi ye charts ko na, aap you can pop these charts out. Aap, you want to look at multiple charts. Aap ek saath, you want to look at Nifty, Bank Nifty, all that analysis that you want to do. Let's say you can do that on an ICICI Direct, and do your studies, save your studies, so that again, as we're saying, in market, the time to analyze is extremely important. Which I'm sure over the weekend, over evenings, which lot of successful people, traders, invest a lot of time. So that was the first thing, and I want to talk about, on the charts, on some bit of it. The second thing I want to talk about, is backtesting, right? And this is for traders, specifically option traders. If I were to say, let's say मैं कोई backtest करता हूँ, I backtest my strategy, let's say short straddle, right? Now, short straddle is simple strategy, which means market is trading at 22,500. I will go tomorrow morning when market opens at 22,500. I will go and sell at the money options, which means 22,500 ka I will sell call, 22,500 ka I will sell put. If you look at the premiums, if I were to just show you on the watch list, अगर आप इसे देखें तो if you see the premium, it's what 100 plus, 134. In fact, all buyers ne pehli baar, or if you look at 2250, 550 actually, if you look at this level, 64.48, so around 120, 10 rupees ka premium inflow ho raha hai, which means if market remains within this range, I make money. But I want to backtest it कि ये तो बोलना आसान है, but ये कितनी बार अगर ये मैं होता ऐसा
तो I would have made money in this strategy, right? So आप F&O सेक्शन पे जाके आप बैक टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और आप यहाँ पे हमने कुछ सेव कर रखा है स्ट्रेटेजीज। आप मतलब अगर, या तो लेट मी स्टार्ट विथ कि अगर आपने नहीं भी सेव करा है तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। जैसे कि आपने अपना नाम डाला टेस्ट, एंड कुछ टेम्पलेट्स हमने दे दिए हैं कि आपने शॉर्ट स्टार्ट करा, आपने जो भी स्ट्रेटेजीज आपको सेलेक्ट कर रही है, और आपने एज बी सेड एट द मनी ऑप्शंस आपने जाके बेच दिया, और आपने कुछ पैरामीटर्स एडिशनल डालने हैं कि मैंने अगर कितना मेरे को स्टॉप लॉस रखना है, कितना टेक प्रॉफिट रखना है, आई वांट टू डिप्लॉय दिस स्ट्रैटेजी ओनली ऑन अ थर्सडे। आई मीन आपने जो जो कंडीशंस आपको लग रहा है वो अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, बट एक बार मैं सिंपल रखता हूँ, मैं एक सिंपल स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करता हूँ कि रोज सुबह आता हूँ, at the money I will sell options. What is the back testing that I do? Let me just put an amount of 5 lakh because the amount required is here higher. So what it will do is it will take the it will show me, and I have done this from November to Feb of this month, right? तो मेरी स्ट्रैटेजी में पैसा बनता कि नहीं बनता, अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी लास्ट ऑलमोस्ट 3 मंथ्स रन करी होती। सो अभी जैसे अभी इफ यू सी हियर ये 26% हुआ है, मेरा अभी नेगेटिव रिटर्न है, तो मैं शायद ये स्ट्रैटेजी क्यों डिप्लॉय करूं, मतलब ऑब्वियसली दी इट्स नॉट कंप्लीट एज येट, बट then I can decide, or I can fine tune. मेरे को 9:15 की जगह I want to shift it to 9:20, let's say, or I want to do it to 9:25. I can fine tune my strategies, or I want to exit early. मैं 3 o'clock risk नहीं लेना चाहता. I mean, I can do various things and then look at improving my strategy. So if you, and then once we are more confident कि देखो ये होता है, इसका max drawdown कितना होता है ये strategy का, let's say this strategy would have worked in my favor, right? I mean, the last 3 months, every day if I do it, but मेरा drawdown जो होता है worst day में has been around 7%. So I get a lot of insights, when I am trading, and then I deploy, my strategy. So I'm saying that we've got these tools which you can use. These are all free of charges. There are no charges that you pay on back testing, right? And I will just, let me just take one strategy जो बहुत सारे लोग करते हैं, and test one strategy, which is लोग call buy कर लेते हैं या call put दोनों buy कर लेते हैं, and let me just add another leg. एक पुट का लेग आई करता हूँ, एटीएम के ऑप्शंस बाय करता हूँ। आई एम सेइंग लॉट ऑफ पीपल डू दिस 0-0 ट्रेड्स, राइट? कि वो 2 बजे आते हैं और उनको लगता है यार 2:30 बजे के बाद एक मूव आएगा, और लेट्स से मैंने 2 बजे जाके एक्सपायरी के दिन, लेट्स डू दिस, सपोज 2 बजे ले लेते हैं, 2 बज के, एंड वी विल डू दिस ऑन एक्सपायरी. Suppose we do this only on expiries if we do, which is Thursday, right? And if I do this strategy कि मैंने call भी खरीद लिया, put भी खरीद लिया, market उधर गई, and volatility, there is volatility in the market, what is the kind of returns will I make, right? Does this strategy work for me? So I can, I mean, I can just go and do this. Let me just see if I have selected the days here, which is only Thursday. I want to do this strategy. I want to buy, right? I want to buy at the money call, at the money put options, and I'm doing this strategy. And let me again put a money of 5 lakhs, and I'm just trying to test, right? I'm not doing any live trade. I'm just trying to test if I did this strategy in the previous 6 months, would I have made money in the market? And मैंने time भी change करा है, मैंने 2 बजे करा है, and we can change these parameters. देखिए 2 बजे कर रहा हूँ तो शायद returns अलग आ रहे हैं, शायद 9 बजे करूंगा सुबह या 9:15 बजे करूंगा तो रिटर्न्स अलग आएंगे. लेट्स सी. आई मीन आई एम आल्सो डूइंग इट. सो दिस स्ट्रैटेजी हैज नॉट मेक मनी फॉर मी, right? I mean, in fact, I'm getting a minus 2%, 2.3% drawdown on this strategy. So I can then go back and I can then, try to, let's say, optimize my strategy, right? कि, if I, मैं time change करता हूँ, मैं इसको 3 बजे करता हूँ, let me start this strategy at 3 o'clock, let's say, or 2:55, because उस समय market में move आता है. So I'm only trying to give you a perspective that all that is possible on ICICI Direct, platform, wherein you could look at back testing as many strategies as you want, and then getting more comfortable, and then taking these strategies to live and then place trades.
So as I said, I'm just running one more backtesting just to get a sense of indeed what happens. So let's see the results as 14% here. And in the meantime, I'm also going to look at the YouTube comment section if there are any comments for us to see. Okay, so somebody wants to see Greeks on option chain. I can do that. Okay, so yeah, so if you see here, this strategy has indeed not been working. In fact, it's a pretty because the market is also smart. See, the market में premiums पहले ही spike हो जाते होंगे, and that is one of the reasons why these trades haven't kind of worked. I mean, so the point is आप backtest करके right strategy deploy करें. मतलब I think that is a very very clear learning. If you ask, this is extremely इसको please spend time on this platform. You can spend hours on this platform and there are no charges, right? I mean, आपको जितना practice करना है करो आप. The limited point is, and I can tell you, there are a lot of engineers, who are trading today in stock markets, and I can tell you that successful traders, I mean, they are really spending a lot of time on analysis. They will go into candle size, कि हम 1 minute का candle. They will go into tick by tick data. I mean, the kind of depth which people do get is very very high. So I'm just is my submission again for people to look at more data while they're trading. I mean, I'll just give you a very small use case of people who are trading, and what we have in trading as well as what we call as flash trade. But the important, again, the learning here is कि आप ये ट्रेड कर रहे हो, आप ये ऑप्शन देख रहे हो और आपको प्राइसेस दिख रहे हैं. द सिंपलेस्ट थिंग इज आप ऑप्शन ट्रेड करने के पहले कम से कम एक बॉलिंजर बैंड बना दो, और आपको दिख रहा है कि अच्छा ये प्राइस जो है अभी लेट्स से सपोर्ट पे है. मतलब ऑब्वियसली लाइव मार्केट नहीं है, सो इट्स वी कांट डिसाइड बट आप कम से कम व्हाट इज द बॉलिंजर बैंड की इस लेवल, दिस इज अ रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट. इसके जनरली आई मीन इट विल टेक सपोर्ट हियर, बट इफ इट ब्रेक्स इट काइंड ऑफ गिव्स यू ब्रेकआउट. तो लोग फिर यहाँ पे अगर इसका ब्रेक करता है लेवल, तो पीपल काइंड ऑफ टेक आई मीन दी अपोजिट डायरेक्शन व्हिच इज लाइक दे थिंक अब नीचे जाएगा. बट कम से कम पीपल अप्लाई सम इंडिकेटर्स, जैसे कि आपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज ले लिया कि कहाँ पे लेट्स से विजिबल रेंज लेते हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने पोजीशन करी है. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिखेगा अभी आपको कि कहाँ पे ज्यादा पोजीशंस एक्यूमुलेट हुई है मार्केट में. सो जैसे 50 रुपए पे लोगों ने एक्यूमुलेट करा है. नाउ दीस पीपल विल बी अंडर प्रेशर इफ द बिकॉज इट्स कम डाउन टू 35 रुपीस. So again, the limited summation is that you can look at these information while trading, and then you want to execute if it comes to your support level. कि अब लग रहा है एक बार ट्राई करने का यहाँ पे, तो फिर आप यहीं पे बटन दबाओ आपका और डाउन का, and your trade is done. So I mean, and then you can monitor it on the charts. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. You will be able to see the open positions, P&L, orders, everything on the chart. एंड यहाँ पे हमने सेटिंग्स ऑप्शन दिया है, तो किसी को टाइमर वाइमर कुछ नहीं चाहिए कि मैं अपना डिसाइड करूंगा मेरे को कब बेचना है. कोई लोग सेलर्स होते हैं, ऑप्शन राइट करेंगे, वो अपना यूज कर सकते हैं इसको. सो आप अपना जो भी कस्टमाइजेशन है वो आप यहाँ पे कर सकते हो. बट द लिमिटेड पॉइंट इज please spend a little bit of time on trading platforms which helps you kind of look at markets. I just will take one which I saw on the chat was on the this one, Greeks. So we've got Greeks on the platform, right? So अगर आप देखें तो IVs वगैरह हम option chain पे strategy builder पे देते हैं, right? Is what you go to strategy builder, you will be able to see IVs. और फिर हम स्ट्रैटेजी लेवल ग्रीक्स देते हैं. तो लेट्स से मैं अगर 26,500 के पुट बेचता हूं कल के लिए लेट्स से, और मैं थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, सो लेट मी गो एंड सेल 26,600 के, आई एम गोना सेल कॉल्स, राइट? मैंने आई एम जस्ट डन strategy. Now we can, whether right wrong that is time will say. So अब आप देखो इसको, तो मेरे को इसका पूरा पे ऑफ दिख रहा है, मेरे को इसके ग्रीक्स दिख रहे हैं, मेरे को डेल्टा दिख रहा है, and I want to see save this strategy. Let's say I just save this strategy, and अब मेरे को स्ट्रैटेजी लेवल आप देखो
तो मुझे मेरा डेल्टा दिख रहा है कि मेरा डेल्टा, एम आई डेल्टा न्यूट्रल, मेरा गामा कितना है इसके अंदर, थीटा कितना बाकी है, बिकॉज एवरीथिंग इज थीटा इसके अंदर। सो आपको सब कुछ एक साथ फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है, और आपने इसको ट्रेड करना है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये सब चीजें हमने हमारे स्मार्ट टूल्स सेक्शन पे वी हैव गिवन दैट ऑल दीज ऑप्शंस हियर, which helps you, I mean, again, as I said, this is not for impulsive trading. This is not about कि you get into the market and then start trading. उसके लिए तो, if you ask me, watch list का option chain is the simplest thing. This is for little bit of planning. Where you plan the trade, you will analyze the trade, you look at delta, are you delta neutral, आपका delta है कितना पोजीशन का। बहुत सारे लोग delta neutral trade करने की कोशिश करते हैं। So I'm just saying that you could plan your trades here and then execute it through this window itself. But that's a thing that I want to talk about. I want to spend a few minutes on basket order again for people who are trading in the markets. And I can just want to make one submission to you. See, trading is, whoever is listening to this webinar, I would assume people are actively in the markets, right? Trading is not easy. Trading really gets the worst out of us at times, because the emotions are so high. There is so much of adrenaline rush. Achanak se you will see a big candle, bada spike aega, and we think, markets are moving. And usme people who trade options, and more so option sellers जो बिना hedge के trade करते हैं, I mean, इसमें recipe for disaster. The problem is, out of 10 trades, 6-7 trades will go right. It is those 2-3 trades which go really wrong, wherein we lose a lot of money. And उसमें क्या होता है, because 6-7 trades go right for an option sellers, people don't hedge because उनको लगता है hedge is a cost. मैंने अगर suppose call sell करा है और मैंने 60 रुपए का call sell करा, अब if I go and buy, let me just do this strategy. In fact, let me just do a short. Let's just do it. So I'm saying कि let me put 20 to 50 पे करते हैं. So if we are selling this options, so अगर आप, if you sell this, the change, people think कि जो मेरा, if I am buying, let me buy a put actually. Let me not do this strategy. Let me buy a call in front. We will do a bull call spread. बुल पुट स्प्रेड करते हैं. तो if I am selling a put, let's say yesterday for tomorrow's market, if suppose GIFT Nifty is where it is and to US is also good, let's say we feel कि 22,500 is a key level in the market, I'm going to sell options. तो मेरे को 34 रुपए का inflow आ रहा है. Now a lot of people will just sell naked options. They will not go and hedge because उनको लगता है कि अगर मैंने hedge करके 25 रुपए का प्रीमियम दिया तो मेरा inflow is only 10 rupees. Now the problem which precisely happens is that markets are markets, it goes anywhere, and people don't hedge it, and the loss then really becomes unlimited. But when you buy a protection which is a put, आप देखो, the loss is restricted to how much, मतलब it is clearly restricted. मतलब 11 रुपए का, मतलब मतलब 11 रुपए का इन्फ्लो हुआ, 50 पॉइंट का है तो 39 रुपीज से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है. So, the thing that we want to say is that there are option strategies which people are deploying in the markets. It is extremely important to build hedge on that and then deploy it. And, if you see here, I mean, if I may save a strategy again, and आपके margin optimization भी आप देखो, because आपने long options किया है from 1,95,000, the margins have come down to 40,000. Obviously, tomorrow, कल additional ELM margin will get charged, but I'm just saying it brings multiple benefit. Margin requirement कम हो जाता है, risk 100, मतलब I mean you can it is downside is 100% limited, right? I mean it can't be unlimited downside, which is the panacea of the market. आप देखिए 23,600 से लोगों ने कुछ लोगों ने put sell करा है, या people are holding long positions. It is a sizable loss, and I'm saying markets will do this every few weeks on either side. Abhi, I'm saying right now what has happened is, I'm saying longs have got butchered. I mean, there are so many months and weeks that we've seen the call, shorts are butchered. So all I'm saying is it is important to build risk management on the trades that you're doing on ICICI Direct. We will move. I mean, I'm just going to look at some YouTube comments to see if there are things that I could pick up.
Okay. Yeah. So I'll kind of move along. Now, I also wanted to talk about, again, for people who are trading in the markets. One thing that I think which we have done is smart trading, right? I mean, we called it smart trading, and the purpose this solves is, in my mind, many, right? So please do pay attention, and so let's say I am gonna sell certain options, right? And I am a buyer, I may be a seller, it depends upon, I mean, the price is not come because the markets are not working. Now, what is it that I want? I mean, I am selling these options. We saw the price for 48.34, something like that, around 870 rupees ka premium tha. For me, if I'm an option seller, if the premium is, let's say, 80 rupees combined for the straddle, I don't care whether call goes up or put goes down. For me, 80 rupees has to go to 60 rupees. दोनों में से कोई नीचे जाए मुझे नहीं फर्क पड़ता है. So we have today introduced a capability wherein you could put joint positional level, which is the entire order, both the contracts together, stop loss and profit. So I'm saying कि max है, आपके ऊपर है, आपको डालना है, आपके ऊपर है, नहीं डालना है. मतलब we have given all that on the platform. So suppose I want to trade and I say कि मेरा maximum loss आप 1,500 रुपए का करो, और मेरे को अगर सपोज 1,000 रुपए का प्रॉफिट आए तो मेरे लिए बुक कर देना. Now our systems will monitor it and execute it for you. दूसरी चीज which we have done, I think, which is again very very important, is because the big, I mean, the problem in this market is loss तो I'm saying जब होता है वो होता है. The problem is that when we are in a good profitable trade, और वो जब नीचे आ जाता है तो फिर मतलब that it really wrecks our emotion, that कि मतलब and we curse ourselves कि why did we not book profit. So this lock profit and trail profit, what it gives you capability is कि आप बोल रहे हो कि मेरा अगर 500 रुपए का, या सपोज मेरा अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है ना, लेट्स से इसको मैं थोड़ा 1,500 कर देता हूँ टू प्रॉफिट, तो आप कम से कम 750 रुपए को लॉक कर दो. आप मतलब जब मुझे 1,000 होगा ना, तो आप मेरे लिए 750 प्रॉफिट को लॉक, सो दैट एटलीस्ट वो ऊपर जाए तो आपका मैक्स प्रॉफिट है 1,500. आप उसको जो वैल्यू डालना है डाल दीजिए, नहीं डालना है मत डालिए, बट वो हर 1,000 रुपए के प्रॉफिट पे आपका 750 रुपए लॉक कर देगा आपका. सो दैट आई एम सेइंग इट गोज ट्रेल्स अप, एंड देन आई मीन इट विल एटलीस्ट एंश्योर, आई मीन ऑब्वियसली मार्केट में ट्रिगर करेगा तो कुछ वेरिएंस आ जाएगा, बट इट विल एटलीस्ट इट विल अटेम्प्ट टू डू दैट, राइट. और आप इसमें जितनी तरह की स्ट्रैटेजीज डालना चाहते हैं ना, यू कैन लेट्स से मैं 22,600 का कॉल भी खरीदता हूँ, और एक 22,500 का पुट also is what I buy, right? तो मैंने I've sold this and I'm gonna buy these options. So I've hedged myself. I have put my maximum profit, maximum loss. I have put my trail profits, and I have just kept it on the system. और फिर मेरे को I don't stress the markets. So I mean, really helps you to do more controlled environment when you're trading, and more so when you're trading not single options, single leg contracts. You're doing two leg, 3 leg, 4 leg trades, which a lot of people do. I mean, people have learned the hard way that one side trading, naked option selling or naked option buying is not, is not the most prudent strategy. So you could do it, deploy it here. So that's something that I want to talk about. I also, in the same breath, for people जो फिर भी ये नहीं करते हैं and single options trade करते हैं, तो उसके अंदर भी we have given GTT order, जहां पे कि आप टारगेट स्टॉप लॉस दोनों डाल के ऑर्डर डाल सकते हैं. तो सपोज आपने 64 पे लिया, यू आर सेइंग लेट्स से स्टॉप लॉस नहीं डालना है. बहुत लोग पीपल डोंट वांट टू पुट स्टॉप लॉस इन सिस्टम, दैट्स अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट, बट पीपल आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज लोगों को लगता है स्पाइक आएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला जाता है. तो स्टॉप लॉस तो मैं मॉनिटर मैनुअली करूंगा. तो आप बोल रहे हो बट प्रॉफिट में क्या है, मतलब आगे चला जाएगा, आई डोंट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी. आप बोलो 70 रुपए आए, 75 रुपए आए, मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बुक हो जाए. लॉस अगर आपने लेना है तो आप थोड़ा नीचे डाल के जो ले लो कि चलो इतने से ज्यादा तो नहीं लेते हैं. So you can place this, and this is valid not for the day only. This is valid till the expiry of the contract, which is what we call as GTT order. Is good till trigger, right? I mean, it's valid till the expiry. I will just take another case, of use case of GTT for people who have made big money in options buying. तो 23,000 कब पुट लिया मैंने, इट इज ट्रेडिंग एट 435 रुपीज,
ये 15 दिन पहले, 10 दिन पहले 100 रुपए, 150 रुपए पे चल रहा था, अब 430 रुपए पे चल रहा है, राइट? अभी मेरे को क्या चाहिए कि भाई ये तो मैंने अच्छा पैसा बना लिया है इसके अंदर, एंड मैं नहीं चाहता कि ये फिर से कुछ, मतलब आई मीन आई लूज दिस 150 माइनस 435 विच इज लेट्स से 300 रुपीज. सो आई कैन पुट माई टारगेट, विच इज लेट्स से प्राइस ऑफ 410. तो क्या होगा कि जब मैंने 410 का ऑर्डर डाला ना, तो ये ऊपर गया तब तो ठीक है, मार्केट और नीचे गई, आई विल कीप ऑन रनिंग माय प्रॉफिट्स. बट इफ इट कम्स डाउन, 410 में मेरा एग्जिट करेगा, तो 410 माइनस 150, 260 रुपए का प्रॉफिट मेरे को घर पे आएगा ही आएगा. सो आप जीटीटी को ट्रेल ऑर्डर के लिए भी यूज कर सकते हो. ये सिंगल लेग है, ये मल्टीपल लेग नहीं है, बट मल्टीपल यूज केसेस आर देयर. प्लीज आप डू ट्राई दैट. अगेन द पर्पस ऑल दिस इज, आई मीन इफ आई वर टू से, ट्रेडिंग के अंदर many times we know the direction of the market. अभी at 23,800, if now people remember, अभी तो वो ये लेवल याद नहीं आ रहा है, जब 23,800 23,600 का लेवल जब टूटा था, तो इट वाज अ बहुत दिन का लेवल था. वी हैव सीन द मार्केट्स कम डाउन. 22,800 वाज नाउ अ बिग लेवल. वो टूटा है 25,500 पे है. 25,500 डेफिनेटली इनफैक्ट बिगर लेवल. पर अगर ये इसी के नीचे रह गया, नहीं बाउंस करके सस्टेन कर पा रहा है, then the markets will become, let's say, more bigger, weaker. So the point is that in our trade, getting the view is some more, I mean, more chances that we're going to be right on the getting the view. It is, when we don't have a strategy, when we don't deploy stop loss profits, when we get a little more emotional in the market. So these tools helps you do that. Again, let me look at the chat to see if there are comments to see. Yeah. So backtest पे मतलब I have not run, मैं बहुत ज्यादा मैंने, I'm not covering one thing at in too much details, but I can tell you if you spend time on it, आप बहुत, मतलब आप तो full backtest run करके उसके, मतलब आप, मतलब you can go to any levels. There are a lot of things जो कि you will be able to see, which I'm not trying to cover at this point of time. Okay, so let me just cover on things which again people do, a lot of people do, and which becomes helpful to trade, right? So let me again do this, and we can do this for stocks also. I will do this for stocks as well, but let me do this for options first. So let's say 22,500 options pay tomorrow if I trade. And one of the learnings, which Jay says, and I must tell you, is expiry के दिन please OTM options trade करके बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनता है. मतलब unless you really go right in the view, then you make money. अगर एक्सपायरी के दिन आपने ट्रेड करना है, तो इट इज बेस्ट टू बी मिनिमम एटीएम और इन द मनी. मतलब विच मीन्स दैट इज द मार्केट ट्रेडिंग एट 1250, 2250, आप या तो 2250 का लीजिए, और या तो 22,500 के ऑप्शंस लीजिए, बिकॉज उसमें मार्केट मूव करेगा तो आपका प्रीमियम भी मूव करेगा फास्ट. मतलब द डेल्टा इज ऑलमोस्ट 1, राइट? अदरवाइज आप दूर का लोगे, मार्केट 50 पॉइंट मूव करेगा, वो आपका 100 पॉइंट दूर है, तो भी वो ऑप्शंस के प्राइस उतना नहीं मूव करेंगे, और वो लास्ट में आके जीरो हो जाते हैं. सो वन ऑफ द प्रूडेंट इज कि मिनिमम एटीएम और गो टू आईटीएम व्हेन यू सेलेक्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट्स. तो लेट्स से आई वांट टू ट्रेड दिस ऑप्शंस, 100 रुपए पे चल रहा है, आई वांट टू डू 300 क्वांटिटी, बट ऑब्वियसली I don't want to enter, it's like, there is a say, all in, right? I don't want to be all in, which means मैं 300 shares, अभी 300 contracts, I don't want to do at 101, because if it comes down, I mean, then, I'm going to stare at losses straight away. So what I want to do is, I want to say कि every 5 rupee night goes down, up buy 75 shares for me, or say one lot for me. So it goes from 101 to 96. So first at 101, 75 will go, 96, another 75 will go, 91, another 75 will go, 86, another 75 will go. It'll give you a weighted average price of somewhere close to 90, 95. So that, अब क्या है कि obviously आपका व्यू आपने स्टडी करा था कि वो ऊपर का है. अब now when it goes up, आप बोलो 8 रुपए का प्रॉफिट होना, तो मेरे लिए आप 1 लॉट प्रॉफिट बुक कर लेना. तो आपने सिस्टम में डाल के आप बैठ जाओ,
और आपको पूरा मतलब उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि कब व्हेन इट कम्स डाउन, एंड यू आर डूइंग मोर सिस्टमैटिक। ऑब्वियसली आई मस्ट आल्सो टेल यू कि सपोज वो वन वे नीचे ही जाता रहता है तो ऑब्वियसली लॉस तो होगा ही, मतलब वो तो व्यू ही रॉन्ग हो गया आपका, तो आपको फिर उसको एग्जिट करना ही पड़ेगा। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर व्यू राइट है, आप सिस्टमैटिक वे में इज व्हाट यू कैन यूज these products. These are algorithms which we have created, all are approved from the exchanges. जैसे कि if I were to tell you very very simple what people do on the platform, and let's say मैं फ्यूचर लेता हूँ, है ना, मैं 5 फ्यूचर लेता हूँ मैं, एंड आई वांट टू डू अगेन, आई डोंट वांट टू गो ऑल इन, राइट, एंड आई से कि मेरे को ना आप हर 50 पॉइंट पे आप मेरी एवरेजिंग, तो सो आई एम सेइंग कि 2296 पे मैं बाई करूंगा, फिर 50, फिर 50, फिर 50। अगर मार्केट 200 पॉइंट भी गिरता है ना तो भी मेरा एवरेज आई मीन आई विल बी डाउन, आई मीन आई कैन से डाउन एज एन एवरेज, और फिर रिकवरी आती है तो आई विल बुक माई प्रॉफिट्स। सी ये सब पीपल डू इट मैनुअली, हमने सिस्टम में बना के दिया है सो दैट द ट्रेडिंग बिकम्स मोर सिस्टमैटिक rather than impulsive. The this entire problem of trading is the impulsiveness, and it is not, I mean, human beings are not by design impulsive also, but markets make us impulsive. It just I mean, the violence of the moves makes us impulsive. I mean, we've got that for people who are trading large options on expiry day. Let's say if I were to trade Nifty 22,600 options, I mean, I'm doing call, don't take, think that I'm only a bull in the market, but I'm just, saying that suppose I want to do 20,000 contracts, I can say, 1,000 shares आप मेरे लिए ट्रेड करो एक साथ, and you can say every 1 second, so that you don't impact the order book, and you can accumulate a large quantity or 20,000, or you want to sell this quantity, you can do that. So that all that capability, price आप डाल सकते हैं कि मेरे को ना आप 33 रुपए से लेके मेरे को 30 रुपए के बीच में ही लेना है. I'm saying you can decide all that you want, but it helps you get better efficiency in execution. See, these are very, very important because market will move fast, and I mean, to have a fast execution is very, very important. So a lot of these information we have loaded on our smart tools. I mean, all these things that I'm telling you, chart-based trading, which we said charts के ऊपर आप you can make your studies वहीं से execute कर सकते हो. Which we said algorithms जहाँ पे कि आप profit, top loss, मतलब I mean, you can put it. Backtesting, a lot of these information is here, but this is not something which you can use in market hours. Market hours तो मतलब आप भाव मतलब you will be focused on price only. It is post market hour studies which you do on the platform, spend times, build your use cases, and then look at trading. As I said, all that is available for cash market also. So if I were to, let's say, trade, let's say I wanted to trade a particular stock, I want to trade, let's say, Reliance, right? I want to do Reliance intraday, which means I want to buy Reliance, let's say 100 shares, but I want to buy 20 each every time, the stock is down 3 rupees. I want to sell every time the stock moves up by 4 rupees. I can set it up for myself. 3 रुपए के नीचे वो लेता रहेगा, थोड़ा ऊपर रैली आया तो बाउंस करेगा, आपको 2 रुपए का डालना है 2 रुपए डाल दो. सो दैट पीपल व्हाट दे डू इज वो नीचे खरीदते हैं ज्यादा गैप देके, और थोड़ा ऊपर आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं. आई एम सेइंग all that you can set it up on the platform. This is all available, both mobile, both web. These features are available. Scalping is available, sorry, on only a website right now. We are working with the exchanges. The algo circular has also come, which will allow us to offer that on the mobile as well. So some of the things I just wanted to showcase to you, when you're trading on ICICI Direct, to you can look at. Let me just see if on the chat if there are questions that I could look at. So GTT पे which we discussed, absolute डाल सकते हो, profit डाल सकते हो. As we said, bracket is simple. Stop loss, profit, both of it you are putting, and then आप बस दोनों डाल रहे हो. मतलब if I were to say in हिंदी, आप क्या चाहते हो? 100 रुपए आपने खरीदा, 105 आएगा तो मेरा प्रॉफिट बुक कर दीजिएगा. 95 आया तो 5 रुपए का मेरा लॉस बुक कर दीजिए, मुझे सारा लॉस नहीं चाहिए. आप जीटीटी पे बोथ प्रॉफिट स्टॉप लॉस दोनों डाल के आप कर सकते हो ट्रेड.
Let me just take a few more questions. ईएलएम मार्जिन, तो मैं बस एक चीज आपको बता देता हूँ ईएलएम मार्जिन के अंदर, जो कि वैसे आप मार्जिन कैलकुलेटर पे अगर आप हमारे जाएंगे, एंड आई एम जस्ट डूइंग दिस इन हिंदी, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट. So you can go to margin calculator. मतलब first of all, you can do it in the basket order also. मतलब you can see the same thing on margins on basket order. आपको बस strategy लेनी है, short iron condor. आपने strategy लेना है, आपका उसका नाम डालना है, और आपको पूरी मार्जिन दिख रही है कि this is gonna be 76,000 rupees. Now on expiry day, what happens is ये जो आपके short options हैं, so this is 75 into 22,400, let's say, which is, let's say, 20 lakh rupees. और ये भी शॉर्ट ऑप्शन है, ये भी 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 20 लाख प्लस 20 लाख 40 लाख रुपए. तो हर एक लॉट पे 2% ईएलएम एक्स्ट्रा चार्ज होता है, विच मींस ये जो 20 लाख हुआ उस पर 2% मतलब 40,000 रुपए, और दूसरा 20 लाख बिकॉज आपने 2 लाख सेल करे हैं तो उसके ऊपर 40,000 रुपए, तो 80,000 रुपए. तो ये 78,000 पे 80,000 रुपए ऐड हो जाएगा, तो दैट मींस ये 1,60,000 रुपीज का मार्जिन हो जाएगा, बिकॉज एक्सपायरी के दिन अभी जो नए फ्रेमवर्क आया है उसके हिसाब से मार्जिन एक्स्ट्रा ईएलएम मार्जिन चार्ज होता है एक्सपायरी के दिन. ये नॉर्मल दिन आपको नहीं चार्ज होएगा, बट आपको एक्सपायरी के दिन, जो कि कल है, लेट्स से निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इनफैक्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी है, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज होएगा. एंड ये एग्जिस्टिंग पोजीशंस के ऊपर भी चार्ज होगा. सो सपोज आपकी कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस खड़ी हुई हैं और वहां पे भी आपको कल एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज होंगे, तो प्लीज आप उसको जरूर मॉनिटर कीजिएगा. सो लेट मी जस्ट टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेड डालने का ऑप्शन है, लेट मी टेल यू, और भी वी आर वर्किंग ऑन रियली रियली मेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द चार्ट, जहां पे चार्ट पे आप ट्रेड वगैरह अपना देख सकते हैं, यू नो. सो दैट्स समथिंग व्हिच वी आर वर्किंग ऑन. तो लेट्स से वोकार्ड का चार्ट अगर मैं देखूं, ओके, एंड अगर आप देखो तो वोकार्ड एक अभी गया 1148 पे, एक्चुअली बड़ा सपोर्ट है, एक लेवल पे सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट है 1078 पे, बट ठीक है, अभी भी यू नो लेट्स से यहाँ पे गैप फिल नहीं किया था, तो यहाँ पे अगर सपोज मुझे ट्रेड लेना है वोकार्ड पे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे प्लस करूंगा और मेरा बाय ऑर्डर फॉर्म खुल जाएगा, मैं यहाँ से भी ट्रेड कर सकता हूँ. सो you know you can trade, but what we are building to work is is that the lines will get drawn on the charts, and you can see your positions also mapped, that what price did you enter the chart, so that we were really working to make the chart interaction much seamless. I'm just taking few questions which I am seeing. People trading is not there on the platform. I mean, it's not allowed by SEBI. That's why we're not, we're not able to offer that on the platform. What I mean, this is a previous question on backtesting, returns and drawdown. Drawdown is कि आपका कोई गलत दिन, जिस दिन the day you trade doesn't work, it tells you, what is your what was the maximum loss you had. So I see a lot of, okay, so last thing I'm going to say, and I think, is on shares as margin on ICICI Direct, which you can use. I mean, I'm just using this as a test account, that आप अपने shares के अंदर, you can pledge these shares, right? And you can pledge and create a limit on FNO segment. And ये जो limit है, मतलब, on this particular account, you can use entire securities limit. आपको कैश लाने की जरूरत नहीं है. तो 50% का कोई रूल नहीं होता ICICI में. दैट रूल इज नॉट देयर फॉर द क्लाइंट, इट इज देयर फॉर ब्रोकर्स. तो आप अपने, सपोज आपके पास 20 लाख के शेयर्स थे, आपने को 18 लाख की लिमिट मिली, वो आप पूरा यूज कर सकते हो, उससे आप ट्रेड कर सकते हो. कैश मार्जिन लाने की कोई जरूरत नहीं है. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, व्हेन यू आर यूजिंग योर शेयर्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, मतलब आपने शेयर्स लेके आए, आपने इंट्राडे ट्रेड करा, तो अगर आप हमारा आई वैल्यू प्लान लेते हैं, तो उसमें आपको ब्रोकरेज फ्लैट 20 रुपए पर ऑर्डर की पड़ेगी, राइट? आपने 20 रुपए पर ऑर्डर का ब्रोकरेज दिया, जितने भी ट्रेड्स करे, शेयर्स कैश लेके नहीं आए, और ऑप्शन राइटिंग आप कर सकते हैं. जो कैश लेके आता है उसके लिए तो ऑप्शंस आपको, तो मतलब आप आई वैल्यू प्लान ले लीजिए. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि इंट्राडे ट्रेड नहीं करते हैं, स्ट्रैटेजी बैठाते हैं. जैसे कि इफ आई वर टू से, अभी मार्केट पे, मतलब लेट्स से रिलायंस के ऊपर, आईटीसी के ऊपर, मार्केट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, आई मीन लेट्स से मैंने रिलायंस का 1160 का पुट बेचा हुआ है,
अभी मैं इसको पूरे महीने होल्ड करूंगा, राइट? आई डोंट वांट टू सेल दिस ऑप्शंस, एंड मैं आज बेचता हूँ और मैं एक महीना पूरा होल्ड करूंगा, और अगर सपोज एक्सपायरी के दिन 1160 हो जाता है तो मैं कैश शेयर देकर डिलीवरी भी ले लूंगा। मतलब आई मीन यू हैव वेरी स्ट्रेटजीज। उस केस में ज्यादा इंट्राडे नहीं करते, ओवरनाइट करते हो, तो आप हमारा प्राइम प्लान सेलेक्ट करो आईसीआईसी डायरेक्ट के पेज पे जाके, और वहां पे आपको जो आप शेयर्स के ऊपर मार्जिन क्रिएट करोगे, सपोज आपने 1 करोड़ का शेयर्स पे, लेट्स से एग्जांपल पे 90 लाख लिया, और आपने जाके शेयर्स यूज करा, आपको उसके ऊपर इंट्राडे और ओवरनाइट के ऊपर 1 रुपए का ब्याज चार्ज नहीं होगा। अगर आप यहाँ देखें, so there is a 0% interest you will be charged on holding positions for intraday. So for, again, I'm saying this is very, very important, because if I put a trade with a crore margin and I have to put 50 lakh rupees of cash as to the broker account, I'm losing straight away 50 lakh पे मेरा 7% का लॉस हो गया, because ये तो मेरा ब्याज का पैसा, I mean it is like money is cash is cost, right? And I mean it's like almost 3.5-4 lakh का मेरा interest cost चला गया. So you could use your shares on ICICI Direct फॉर ओवरनाइट ट्रेड्स। अगर आप ओवरनाइट ज्यादा करते हैं, इंट्राडे कम करते हैं, तो आपको ब्याज नहीं लगेगा उसमें। जैसे 0% इंटरेस्ट पे ट्रेड करोगे, जो 1 करोड़ रुपीज बिल्कुल चार्ज 12%, यहाँ पे 1 रुपया चार्ज नहीं होगा। ब्रोकेज बिकम्स आई मीन राइट नाउ 9 रुपीज पर लॉट। तो अगर आप, सो इट इज नाउ ऑन योर स्ट्रैटेजी। अगर आप कोई इंट्राडे करना है, आप कैश मार्जिन यूज करते हो या सिक्योरिटीज मार्जिन यूज करते हो, या अगर आप कैश लेके आते हो फिर तो इंट्राडे करो, ओवरनाइट करो, आप 20 रुपए पर ऑर्डर वाला प्लान ले लो। अगर आप स्ट्रैटेजी बना के पोजीशन होल्ड करते हो, एक महीना, मतलब पूरे एक्सपायरी के लिए, वहां पे आपने अपने कैश नहीं क्यों देना, कैश पे तो कॉस्ट ब्याज जाता है, तो यू कैन यूज योर शेयर्स एट 0% इंटरेस्ट रेट ऑन आईसीआईसीआई डायरेक्ट। उस केस पे यू हैव टू ऑप्ट फॉर प्राइम, तो फिर आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। दैट इज द थिंग आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू। So there is this question which says that जो screen पे price दिखता है और trade final execution price different होता है, how to minimize this variance? देखिए, this is extremely important, relevant, the question that you have said, right? And ये जो पूरा एक जो आपने पेपर में पढ़ते होंगे, जेन स्ट्रीट एंड ऑल दैट, अभी क्या होता है, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी तो ऑब्वियसली मार्केट बंद है, इसलिए समझ में नहीं आएगा, बट आप इसका बिडास देखिए, कुछ तो बिडास खड़ा होगा। आप देखिए 4750 30 पे क्वांटिटी खड़ी हुई है, नेक्स्ट क्वांटिटी खड़ी हुई है इसके लास्ट में 4730, ये तो सामने दिख रहा है, मतलब रेस्ट ऑफ शेयर्स वी आर नॉट एबल टू सी नाउ। by the time you trade, no, you will, this price can violently change। मतलब हम डालते डालते ही मतलब भाव चेंज हो जाएगा, बिड आस्क हो जाता है, स्प्रेड आता है। ये दिस इज अ टिपिकल ट्रेडर्स प्रॉब्लम व्हिच हैपेंस। तो अगर आप टिपिकली देन पीपल यूज लिमिट, और लिमिट में क्या करते हैं लोग ना, 50 पैसा ऊपर डाल के ले लेते हैं। मतलब सपोज मैंने 4850 डाला और मैं बाई कर रहा हूँ सपोज, तो क्या होगा कि मेरे को ऐसा होगा कि आई मीन आई इंक्रीज माय चांस ऑफ गेटिंग दी शेयर्स, बट आई नो कि मैं बहुत ज्यादा मैं स्प्रेड क्रिएट नहीं करूंगा अपने लिए। मतलब आई मीन, सो यू कैन यूज लिमिट, प्लेस 1 tick 2 tick हायर प्राइस, एंड देन एग्जीक्यूट द ट्रेड्स, तो आपका वेरिएंस कम हो जाएगा। रिस्क है कि फिर भी ना आए भाव, तो फिर आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। नहीं, स्ट्रैटेजी अगर आप डाल रहे हो, तो स्ट्रैटेजी डालने के बाद वो वर्क करेगा क्या? स्ट्रैटेजी डालने के बाद इट डज वर्क, और वो सिस्टम हमारा खुद मॉनिटर करता है, तो हमारे एल्गोरिथम्स खुद मॉनिटर करते हैं कि आपका जो आपने प्रॉफिट डाला था, जो स्टॉप लॉस डाला था, वो आपको एग्जीक्यूट कर देगा, राइट? सो इफ यू प्लेज आई वैल्यू के अंदर, अगर आप प्लेज करेंगे शेयर्स को, इंट्राडे अगर यूज करते हैं तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, बट अगर आप ओवरनाइट होल्ड करते हैं आई वैल्यू प्लान के अंदर, देन आपको 9.85% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो इसीलिए आई वाज सेइंग कि जो लोग ओवरनाइट पोजीशन ज्यादा रखते हैं और शेयर ज्यादा यूज करते हैं, हायर वैल्यू ऑफ शेयर यूज करते हैं, उन लोग, उनके लिए प्राइम प्लान बेटर होएगा, बिकॉज वहां पे आप ब्याज का पैसा नहीं दे रहे हो। ब्याज का पैसा ज्यादा बड़ा कॉस्ट हो जाता है, बिकॉज ब्रोकरेज को आपने आज ट्रेड करा, आप 5 दिन बाद ही आप स्क्वायर ऑफ करोगे, तो उस 2 ही दिन 2 ही बार ब्रोकरेज चार्ज होने वाली है। So yeah, no. So thank you so much. Pretty interesting, pretty interactive. So many questions that we can see on the chat.
We will, keep on doing these sessions. I think the best learning is just keep on using the platform. Comment on the YouTube section. You can follow us on our Twitter channel, X channel. वहाँ पे भी, if you post your queries, I mean, our team is fully there to respond to you, on anything that you have in your mind for clarification that you would want. You could reach out. I mean, we do a lot of these sessions every Thursday, live market sessions with a research analyst also. So, so thank you again for joining this session today. It is a pleasure, and my apologies for starting this late. Thank you so much. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.